तो गाइस मैं सोच रही थी क्यों ना आज टिश्यू और रिबन्स के फ्लावर्स बनाए जाएं। बट ये फ्लावर्स कैसे बनेंगे? हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अमेजिंग सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने फैशन एंड ग्राफिक वर्ल्ड की छोटी सी दुनिया में। मैं आपकी अपनी रुचिका और मेरी टीम आपके लिए इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। गाइस, फ्लावर्स बनाने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, लाइक कुछ टिश्यू पेपर्स, सीजर, फेविकॉल, स्टेपलर, बैम्बू स्टिक, रिबन, थ्रेड और नीडल और पर्ल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
का यूज करके ये फ्लावर्स कैसे बनाए। गाइस ये फ्लावर्स आप कहाँ यूज कर सकते हो ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो वॉल हैंगिंग में आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज किए हैं, तो आप उनकी जगह ये फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और वो वीडियो देखें। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। गाइस अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलती रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए हाजिर होते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।